A big jolt for the Samajwadi Party in Uttar Pradesh as the BJP has taken both Rampur and Azamgarh. That's one seat that was Akhilesh Yadav's own parliamentary constituency. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo story. We're here today to decode what the Bypoll elections actually mean for the state of our national politics. Yogi Adityanath has been quick to call them triumphantly a message for 2024. But the cat has also been set among the pigeons metaphorically when it comes to who is best poised to take on the BJP. Today, Asaduddin Owaisi targeted Akhilesh Yadav and said the results have made it clear that the Samajwadi Party was not that force in Uttar Pradesh. In Punjab, meanwhile, there has also been a shock in Sangrur, wherein the Chief Minister's constituency, after that dramatic assembly election win, you've had the AAP losing that seat. How do we decode these election results? What do they tell us about how national politics and the BJP versus the non-BJP battles are poised? Let's introduce our guest on the program today. Radhika, Ramaseshan, veteran journalist and commentator, is with us. Kartikeya, Batra, who is of course a research scholar with a focus on politics and the economy, is with us as well. Joining us from the Samajwadi Party is Nasir, its party leader, and joining us from the BJP in Uttar Pradesh is Ashwini, Shahi, a spokesperson and leader for his party in the state. Thank you very much, everybody. And I think, actually start with Ashwini. And Ashwini, of course, it's a big win, a big boost for the BJP because जिन सीट्स में ये आपकी जीत हुई है, उनमें से एक सीट तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खुद की सीट हुआ करती थी. आप इन रिजल्ट्स को किस नजरिए से देखते हैं? What is the reason that your party was able to win these two seats? बरखा जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बेहतर नीतियां, उत्तर प्रदेश का एक सक्षम नेतृत्व, राष्ट्रीय सक्षम नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के लिए जनता के मन में बढ़ती हुई उदासी की प्रतिक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा 2019 के लोकसभा चुनाव से, जिस समय अखिलेश जी वहां से चुनकर आए, वहां से वापस उन्होंने 36 घंटे सिर्फ वहां पर वो रहे हैं। 36 घंटे का मतलब 24 घंटे वो बधाई देने गए थे वहां की जनता को, और 12 घंटे किसी कार्यकर्ता की देहांत पर गए थे। ये 36 घंटे का वहां उनका रहा इतिहास। और 35% जितने दिल्ली जाते हैं तो सदन में 35% उनकी उपस्थिति होती है, उसमें आजमगढ़ के लिए एक भी सवाल नहीं होता है। तो वहां की जनता ये देख रही है कि हम एक बड़े नेतृत्व को, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे को हमने जिताकर भेजा और हमारा कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना वो हमारे यहाँ आते हैं ना हमारा हाल लेते हैं। उसी के दूसरी निरहुआ जी जो चुनाव लड़े थे, जिस दिन से चुनाव हारे 3,61,000 वोट पाकर, और उसके दूसरे दिन से वो क्षेत्र नहीं छोड़ा उन्होंने। गांव डगर उनके यहाँ लोगों के सुख और दुख के साथ ही रहे। वो आज जनता ने वहां पर उनको उसका परिणाम देकर दिल्ली भेजा है। आज की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी राजनीतिक रूप से एक डरपोक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने ही भाई को वहां पर उनकी राजनीतिक हत्या की, शहीद किया है वहां भेजकर। क्या डिंपल यादव वहां चुनाव लड़ती तो वो चुनाव प्रचार में नहीं जाते? चाहे रामपुर, चाहे वहां एक बड़ा नेता होता है अगर क्षेत्रीय दल का, तो उस पूरी जो जनता की जो उसमें जुड़ाव होता है वो उसके नाम पर होता है। उनके जाने पर 10, 20, 25 हजार वोट कहीं इधर उधर हो सकते थे उनके, लेकिन वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। ये भी एक कारण रहा जो वो चुनाव से हारे। और राजनीतिक इतिहास में जब से आजादी मिली है तब से 2 घटनाएं महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हुई हैं। एक तो कांग्रेस का विधान परिषद से सफाया होना, और समाजवादी पार्टी की 3 सीटें जब से ये लोग समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आज जो सफल नेतृत्व योगी जी के ऊपर लोगों का भरोसा दिख रहा है। योगी जी उनके सुख दुख के साथी हैं, हर तरह एक बढ़िया योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच में रहने का काम कर रहे हैं। और जो लोग भी हमारे विपक्ष के लोग हैं वो देख रहे हैं, माननीय योगी जी ने कहा है कि 80 सीट हम जीतेंगे, हम उस रास्ते पर अग्रसर हैं। जी बरखा जी। जी, योगी जी तो कह चुके हैं कि 2024 में इन चुनावों की एक इशारा से ज्यादा एक डायरेक्शन मिलती है कि which way the winds are blowing. नासिर, आपसे पूछूंगी, जाहिर सी बात है you all must be very very disappointed, but I think Ashwini Shahi makes an important point about the part-time politics of the opposition. We have not seen a consistent grassroots, based sort of on the ground
attempt to take on the BJP, which is clearly a 24/7 electoral machinery. Nasir, how do you see these results? Good evening, Barkha. Great to be back. Okay, so I heard Ashwini ji, मैंने उनकी पूरी बात सुनी. And to your specific question, देखिए हमारा ये मानना और कहना है कि समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी थी और है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, और उसने 2022 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया जनता के बीच. मैं मानता हूं कि सरकार नहीं बन पाई, मगर आप ये भी समझें कि कई सीटों में, मतलब ये सीट अगर मैं नंबर आपके सामने रखना चाहूंगा, 30 से 40 सीट तो ऐसी थी जिसमें अंतर 5000 से कम था वोट का. तो इसमें एक बहुत बड़ी वाहवाह करने की भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत रही है, ऐसी बात सच नहीं है. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हाँ हमारी हार हुई आजमगढ़ में और रामपुर में, और खास करके अगर आजमगढ़ की मैं बात करूं तो लोकसभा के चुनाव में 4000 का अंतर बड़ा अंतर नहीं होता है बरखा जी. It's not a very big number, Barkha. We have to understand that. Having said that, we will introspect. But the vote share, for example, if you compare the vote share of percentage of vote share between 2012 and 2022, Barkha, and 14 and 19, the Samajwadi Party has obviously shown a graph which is moving upwards. We have been ensuring that our vote share is increased and we are getting more number of people. देखिए, हमारी पार्टी का एक बहुत पुराना एक स्टैंप है कि ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, मगर ऐसा नहीं है. अगर आप अभी देखें, बहुत वर्गों के लोगों ने हमको आगे प्रमोट किया है और हमको सपोर्ट किया. 2022 के असेंबली चुनाव में यही सुनने में आई बातें. और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव डरपोक है, मगर सबसे बड़े डरपोक तो इनके लीडर हैं. और कैसे, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा. नामांकन के समय इन्होंने चीहरण किया, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र लड़ते रहते हैं. ये मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, ये सारी चीजें आपके सामने हैं बरखा जी. हमने ऐसी क्या डरपोक वाली क्या बात आपको लगी? what part of the BJP's leadership or what action of theirs are you calling डरपोक? Barkha, it is a very clear objective. The objective is आप मतदान को नहीं अपना वोट करने दे रहे, आप कैंडिडेट को स्ट्रांग रूम में नहीं घुसने दे रहे. ये कौन सी पॉलिसीज हैं? तो आप are you questioning the integrity of the electoral process here? We are questioning the misuse of the administrative powers that the UP administration is doing. Okay. EC is independent. I agree with you, Barkha. But today, there are enough evidences of video shoots where the SSP and the DM are celebrating and they're happier than the BJP. Why is it that the machinery is being misused? Our point is very, very simple, Barkha. Today, the BJP is using every force available, whether it's the CBI, the ED, the income tax departments, and even their own brute administrative force, which should be used for the benefit of the people of the state. It is being used against the opposition. ये कौन सी पहली सरकार थी जो आप ये बताइए चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहती है? चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. मुझे तो थोड़ा ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगती है than what you have said. But before I get Radhika and Kartikeya to respond, Ashwini ji, अगर आप थोड़ा सा इस पे बयान देना चाहें briefly, and then I'll open it up. जी बरखा जी, देखिए इसमें बहुत एकदम साफ है. अभी देखिए इन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव की पार्टी. मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, मुस्लिम और यादव की पार्टी में ये पहले मैंने कहा मजबूत नेतृत्व की बात योगी जी की. 2022 के इलेक्शन में देखा गया है, अगर वोट परसेंटेज निकाला गया तो 8% मुस्लिम्स ने भी हमको वोट दिया है. अब वो माइग्रेट हो रहे हैं उधर से इधर. 12% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है. ये बहुत स्पष्ट है कि अब ये भरोसा उतर गया है कि अखिलेश जी के ऊपर से, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी यादव का जो भरोसा था उनके जनता में, उनके लोगों में, वो अब नहीं रहा. क्योंकि जब से इन्होंने पार्टी की कमाल संभाली है तब से देखिए सारे चुनाव ये हारते आए हैं. 14 से लेकर 14 है, 17 है, 19 है, 22 है और ये बाई इलेक्शन है. सारे चुनाव ये हारे हैं जब से इन्होंने कमान संभाली है पार्टी की.
तो मेरा ये मानना है बहुत स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश की जनता आज ये देख रही है कि हम जिसके सहारे थे वो हमारा सहारा नहीं बन पाएगा। वो एक दंभ, मोह और मद की राजनीति करते हैं, इसलिए उनकी जनता किनारा करके बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी। तो उस 19 का चुनाव ये किस तरह से जीते। आज वो अलग हुए, तुरंत इनको बी टीम कहना शुरू कर दिया कि बसपा जो है बी टीम है भाजपा की। वो राजनीतिक दल है और आपसे बड़ा दल है इस समय सदन में। आज उसके ज्यादा एमपी हैं सदन में, आप तो 3 पर आकर रह गए, 3 ही एमपी हैं आपके पास। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आरोप लगाना जानते हैं। तो हम इनकी राजनीति है ये जैसा करें, भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बहुत मजबूती से अंजाम दे रही है और करती रहेगी। और जो आरोप इन्होंने लगाया है, और बरखा जी आपने उसको टोका भी कि संविधान के द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर उंगली उठाना, तो ये कोई पहली चीज नहीं है। हम यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, ईडी और सीबीआई क्यों नहीं हम लोगों के ऊपर आकर कुछ करती है? जो चोर होगा उसके ऊपर ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, उसको जवाब देना है, अपने आप को पाक साफ साबित करके वापिस आना है। वैसे हम लोगों के ऊपर नहीं आ रही है। वैसे अश्विनी जी, महाराष्ट्र के बिल्कुल ठीक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में आज संजय राउत को ईडी के समन्स मिले हैं, तो वो एक अलग चर्चा की बात है। लेकिन एक मिनट, उस पे भी आएंगे, पहले थोड़ा यूपी की बात कर ले। राधिका, यू नो उत्तर प्रदेश बेटर देन आई थिंक एनीबॉडी। आजमगढ़ गोइंग टू द बीजेपी, नासिर कुछ भी बोले, इट इज अ बिग झटका। यस, इट इज अ स्लेंडर मार्जिन, आई कंसीड दैट, ऑफ अ few thousand votes, but it is like losing for the Congress to lose an Amethi or a Raebareli. It is akin to that. Radhika, what is the import of these 2 seats going to the BJP in Uttar Pradesh? Yeah, good evening, Barkha. To me, it's not germane whether Dharmender Yadav lost Azamgarh by 3,000 or 4,000 votes. The point is that he lost, and one of the few remaining bastions of the Samajwadi Party has fallen to the BJP. Now, when I didn't really visit Azamgarh during the by-election, but I was following reports, particularly in the Hindi newspapers, and I have no reasons to disbelieve any of them. The BJP came out with all the guns blazing in both the seats. It left nothing to chance. Their model of electioneering is now what other parties should be looking at. Yogi Adityanath addressed 2 rallies each in the 2 constituencies. He put Keshav Prasad Maurya, the deputy CM, in charge of Azamgarh as well as Rampur. But Azamgarh was really the seat the BJP focused on. It used a minister, Girish Chandra Yadav, because this is a Yadav Muslim majority constituency. He used him for to oversee the whole process. And there were a lot of others who were brought into service, and typically the BJP kind of understood the social equations and, who should be put where and so on and so forth. And, in the very clinical way that they approach elections, that was exactly the model that was followed. And I think the spokesperson rightly said that Dinesh Yadav, who won the seat in Azamgarh, didn't lose even a day after losing to Akhilesh. He focused on Azamgarh. Yes. And today, privately, SP people are telling me that their mistake was not to announce a candidate immediately after Akhilesh resigned, and you knew that there was going to be a Bypoll. Mayawati announced a candidate. She normally never reacts with such alacrity, but on this occasion she did. Guddu Jamali. And he took away quite a chunk of the Muslim votes, by the way, which also tells you that the Muslim Yadav coalition is unraveling at some point, and Akhilesh Yadav should seriously look at it. It is obvious. But isn't it interesting that Mayawati, who did not have anything to speak of in this seat in the last election, is able to pick up a percentage this time, Radhika? Why would she even be considered? If let's say the non-BJP bases are voting strategically, how do you explain the BSP being able to take a certain percentage of the vote? Okay. Now, Guddu Jamali has represented Azamgarh in the assembly twice.
and he does command quite a bit of votes. He is what they say a Sthaniya Neta, and he made that his campaign plank: outsiders versus interlopers, and he is there to help people when they need him. So I think these factors kind of helped him, went in his favor. So regardless of whether he was in the BSP or not, he won on his own steam, and particularly after the recent spate of events involving the minorities, in which the minorities were allegedly were targeted in Uttar Pradesh, the bulldozers and demolition and so on. I mean, did you hear even a word from Akhilesh? I was shocked. Then came, after much pressure on social media, put out a very anodyne kind of tweet. Guddu Jamali, on the other hand, apparently spoke in very loud terms about, he condemned Yeah. the demolition. And that, I think, is exactly what the minorities want to hear. Someone who's articulating their trauma, their travails, which they are no longer But expect. though of course the irony, and I'll take this to Kartikeya, is that if you have small parties picking up a section of, let's say, the Muslim vote, the advantage is in fact to the BJP, because your vote against the BJP is getting divided, Kartikeya. And of course, the BSP seems to have done precisely that in Azamgarh, if you look at the vote share breakup. But I think the point that Radhika makes is very important about the absence of Akhilesh Yadav on issues concerning the minorities, therefore no longer being seen, or his party no longer being seen as even the party of Muslims and Yadavs, which is a tag he's tried to outgrow. Kartikeya? It's just so much to be said, Barkha, on this. This is one of the, I think, juiciest results in the last few months. And I was sort of waiting for my turn because there's just so much that has been said and that requires a response. I think, first of all, I would agree with Ashwini ji that 8% Muslim vote in 2022 is not trivial. So something is happening there which we need to look out for. But be that as it may, I mean, I think that transition, even if it's happening, it's going to be at a very glacial pace. So let's just look at what's happening. We've spoken about Azamgarh. With your permission, let me just draw a comparison between Rampur and Azamgarh, right? Because both of these were the gurs of the Samajwadi Party before this election. Rampur known for Mr. Azam Khan, and Azamgarh, for the Yadav Muslim combination. So what do the numbers tell us? You have to understand that in one seat, the BSP did not contest, and in the other, the BSP contested. So what explains that, right? So if you were to just run the numbers, Barkha, you will understand that Azamgarh, the Rampur area rather, is an area where the Muslim vote is not the swing vote, it is the base vote. When I say the base vote, it is 50% of the population. Rampur district is Muslims, right? So if the SP is going in, its base vote is the Muslim vote, and then the BJP wants every other vote to go in their favor to win Rampur. Does that explain the BSP pulling out? Because there is a Dalit population which otherwise probably would have voted for the BSP, even though I think the BSP's popularity even among Jata Dalits is going down now. But had the BSP participated, that last Dalit vote could have made a difference against the BJP. So did the BSP pull out because of that? Now let's cut to Azamgarh. Azamgarh, if Rampur is an election that shows you how bipolar elections have become in each and every Indian state, where it's usually the BJP versus someone else, Azamgarh is that classic pre-2017 UP election where 30-31 wins you the election. So as your graphics are saying, 34% SP, 34% BJP, 33% SP, 29% BSP. This used to be the shape of UP politics pre-2017. What still explains Azamgarh is, in Azamgarh, the Muslim vote is a swing vote. 25% scheduled caste, 50-odd% Muslims, and then you have 15 to 20% Yadav votes. So Samajwadi Party would have ideally begun with a 30% MY combination and had to get additional votes to win, which would have been not that difficult had it not been for the BSP coming in with their sizable Dalit base vote, through which they could have weaned away some of the Muslim votes from the Samajwadi Party. Okay, hang on. That's what they seem to have done. Can I summarize your argument in layperson's terms? That if you look at the numbers, it basically tells you that Rampur has been a complete Hindu consolidation, because Rampur has half
as you said, the population being Muslim. So there's been a complete Hindu consolidation that has delivered the BJP its victory. The BSP has stayed out so as to not fragment the Hindu vote. And that is the point that you're making. And in Azamgarh, you actually see the Muslim vote, by contrast, actually getting fragmented, which is the point that I think Radhika also made. Now, politically, Kartikeya, if you have to sum it up before I go back to our two politicians, politically, what is the lesson in this for the non-BJP parties? Politically in UP, the lesson is the BSP is going down. What remains now to be seen is how much damage can it cause to the SP while it's going down. I think that for me is the biggest message. The other message is that I think this is a victory for even Yogi Adityanath because bypolls are not fought with national faces too much. I think because there's this risk that you run of either winning or losing. So I think it's going to be a boost to him also, and that might spice up intra-BJP politics going further. But I think I don't read too much into bypoll results because, Barkha, if you remember, just before 2019 elections, the SP-BSP combined won elections in seats where you did not expect them to, Gorakhpur, Phulpur, etc. But the results in 2019 are very different. This, how I am analyzing this is not a trend, but probably is a continuation of the honeymoon period of the 2022 assembly election, as well as the arithmetic that I just explained to you, where the BSP's decline in the next few years or months is going to have a bearing on the Samajwadi Party's fortunes. Very interesting. Nasir, do you want to come in on that, please? That's a great point that Karthikeya has made. And I'll tell you, Barkha, two things. I think, obviously, Mayawati ji is a losing face. Everyone is aware of it. You saw exactly what happened in the assembly elections. And, SP is the force to be with. Our opinion, yes, the Azamgarh seat we lost by, again, a very, very small margin. Yes, we did lose and we accepted humbly. But I think the biggest challenge right now is, and what we will need to tell our voters at least, and which we will, I can assure you, we're going to go out and be communicating to all the voters through the entire Sangathan and through the entire, outreach program that we do, that Mayawati, that Behenji is only and only there to ensure that the BJP is winning. Her only objective, Barkha, right now is to ensure that how will the Samajwadi Party further reduce its vote share, which it cannot happen. But do you want to come in on Radhika Ramaseshan's point that your party became so defensive about the Muslim Yadav tag that when there were issues to take a stand on vis-a-vis the minorities, you did not even do that? Barkha, I am very vocal about my opinions, and so I will say this, and I will admit this, that we need to have a better balance between the pro-minority as against the majority statements that we make. Barkha, I have spoken to our national president myself multiple times, and we have kind of conveyed this message. That, what is the message? The message is that we have to come out. We are standing with the Muslim community. We are not standing alone with the Muslim community. We're standing with all the communities that have been tortured or who've been put against the wall. But it's time now to also maybe show some more action. And I agree with you. I think maybe would you concede that your party has been silent and defensive? No, I would not say I would concede that they've been silent and defensive. But what we could have done is that, you see, there is something called a reverse polarization issue that UP is famous for. Please understand and let's respect the fact that, Barkha, today if an Akhilesh Yadav ji gets up and starts saying, more than expected as far as the entire Muslim community is concerned, the majority will come forward and say, "Arey, dekhiye, ye to Muslim ki party hai." So and by the way, the social media calls the Samajwadi Party a Namazwadi Party. Again, the false narrative that is created by the BJP and the tools they use to malign their opposition is something which also needs to be given importance to. And my opinion is, Barkha, that we have to strike a right balance. Akhilesh Yadav ji did speak about it. Maybe we could have spoken more about it. But I think that's perceptive. I think that's perceptive. And I want Radhika to come in before I come to Ashwini ji, because, I think that balance, what the BJP has done very successfully is pushed most of the sort of parties that are not identified by religion,
So, Mr. Owaisi, for example, will not bother to be defensive, but almost every other party has this defensiveness of where it finds that balance between not being seen as a party of, for, and by Muslims, but still speaking on issues that concern religious minorities. And in that defensiveness, they probably end up being nothing to anybody. So the Muslim vote ends up getting fragmented. Radhika? Yeah, absolutely. It's a process with which Akhilesh has been struggling since 2019, I would imagine. Between 14 and 19, it was okay, things hadn't reached such a point. But 19, I would imagine, 17 really was the defining moment when the BJP won the UP elections. And its success was reinforced in 2019. Now, between 2019 and 2022, also, you had a series of incidents, most notably the anti CAA protests, on which there was a very ruthless crackdown in Uttar Pradesh in various places, from West UP to Kanpur and Lucknow and so on. I covered some of the incidents. Again, the Samajwadi Party was silent. The only development which people took note of was Akhilesh Yadav's daughter's presence in a protest in Lucknow, because one of her friends happened to be in the protest. So that was kind of commented upon. But the Samajwadi Party as a whole didn't take a stand on the CAA. So, but then, it didn't really tell on the Samajwadi Party's prospects in the 2022 elections. I mean, Muslims voted like front and center for the Samajwadi Party. They left absolutely nothing. I mean, I haven't seen this kind of consolidation since But then, 1992. what explains the sudden fragmentation of that same consolidating Muslim vote in these bypolls, Radhika? Because they are disenchanted with the Samajwadi Party. They feel they voted with their heart and soul. And unlike Akhilesh, Mulayam Singh Yadav also got a big chunk of the Muslim votes in 1993, and he fought for their rights without, looking over his shoulder. His son has not demonstrated that kind of boldness, if I may say so. Can I just bring in Ashwini? I know, Nasir, you've got to hand up, but Ashwini ji's been waiting. Ashwini ji, 2 points. The BSP is the sort of B team of the BJP, whether it sets out to be that or not. Jaise Kartikeya ne kaha ki BSP is going down, but on its way down, it will take the BJP up and damage the non-BJP parties. And दूसरी इसमें जैसे पहले चुनाव के बाद पूछा जाता था, is it a Modi factor or a Yogi factor? तो इसमें तो शायद योगी जी का खुद का पर्सनल ब्रांड और स्ट्रेंथन हुआ है. इस पे आप क्या बोलेंगे अश्विनी जी? देखिए बरखा जी, बीजेपी की बी टीम बीएसपी को कहना जो है मेरे हिसाब से उचित नहीं है. इसलिए उचित नहीं है कि वो भी एक राजनीतिक दल है, और मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा लोकसभा में उसके सांसद हैं. तो बी टीम कहने की बात नहीं. आज 3 लाख वोट पाने के बाद अगर किसी प्रत्याशी को 3 लाख वोट मिल रहा है उसको बी टीम कहा जाए, ये तो उचित नहीं है. इसको 2014 के उसमें परिदृश्य में देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे वो 60,000 वोट से जीते थे. तब भी तीनों पार्टियां लड़ी थी. दोनों पार्टियां जब मिल गई तो अखिलेश जी इतने वोट से जीते हैं. तो आज भारतीय जनता पार्टी के आगे, समाजवादी पार्टी के आगे बीएसपी को कम आंकना ज्यादा उचित मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जी वहां, अभी राधिका जी ने भी बताया कि वहां पर वो जीत चुके हैं. वो लोकल, वहां के लोकल नेता हैं और अच्छे नेता, अच्छे पकड़ वाले नेता हैं. कहीं अब तो समाजवादी पार्टी को ये डर होना चाहिए कि कहीं इस चुनाव को देखकर जो एम का फैक्टर है वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए कि भाई समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, चलो भाई उधर ही चलो, उनकी सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया है, दलित और उसका फैक्टर हो जाए. तब ये क्या कहेंगे? तब तो ये तो 111 है, उससे भी धराशायी होंगे नीचे. लेकिन आज के दिन में ये देखने वाली बात है. ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा इनसे? ये इनके ही एलाई हैं, हमारे नहीं है. उन्होंने कहा कि अब इनको निकलना पड़ेगा, अपने घर में बैठकर ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, एसी कमरे से बाहर आना पड़ेगा. और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है. तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है. ये लोग चुनाव तो ये है जो आपने ये लास्ट बात कही, ये मेन बात है. ये आपकी पार्टी की जो खिलाफ राजनीतिक दल हैं वो आपकी पार्टी की जितना मेहनत करने के लिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए नजर नहीं आते. मुझे तो ये मेरा अपना इंप्रेशन है. कार्तिकेय, इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें.
नो बरखा, मैं इससे 100% सहमत हूँ इस बात से. 100% agree that while I was saying what I was saying, I wasn't for a minute in any way exonerating the Samajwadi Party. I think in 2022 assembly elections also they missed a trick. They had the social combination in place, but they did not have the gumption or probably the foresight to take one issue and drum it up throughout the state. Something that Tejasvi did really well in Bihar, for example. I think Akhilesh Yadav ji did his social arithmetic really well, but when it came to bringing up issues that cut across these divisions, I don't think he did a very good job. So I think on that front, I completely agree. One more thing, Barkha, just because Ashwini has brought up 2014 election, one should not forget the spectacular rise of the BJP amongst the non-Yadav OBCs, which is really pronounced in this area. So just go back to 2014, Barkha. You'll be astounded that the 2022 number of votes and for BSP, 266,000, is exactly the same that they got in 2014. But what has switched is the order of the number one and the number two party. The Samajwadi Party was number one in 2014 and they are now number two. And that difference is 30,000-40,000 votes. And I won't be surprised if the majority of that is coming from the non-Yadav OBCs. And that is where the BJP has done really well in the last 8 years. And that's one of the biggest reasons of their success in UP. One last thing Ashwini ji said, कि Muslim vote BSP की तरफ चला जाएगा. देखिए, कुछ भी हो जाए वो तो शायद नहीं होगा अब. कारण आपने जो पॉलिटिक्स यूपी में करी है वो एक तो मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको आपने कुछ ज्यादा खुश भी नहीं किया है. एक एंटी यादव आपका टोन बहुत स्ट्रांग रहा है. तो वो जो कॉम्बिनेशन था ना, इफ एट ऑल यू हैव एक्चुअली मेड इट इवन स्ट्रॉन्गर बिहाइंड द समाजवादी पार्टी. वो दोनों मिलकर कहीं भी जाए उनके पीछे नहीं छोड़ेंगे. और बीएसपी के पास मुस्लिम सब नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अंदेशा अगर मुझ जैसे व्यक्ति को हो रहा है, तो जो वोटर है वो तो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो भी समझ ही रहे होंगे. जी, अश्विनी जी, इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें, नासिर एंड राधिका एंड विल क्लोज. अश्विनी जी. देखिए बरखा जी, कार्तिकेय जी एक अच्छी समीक्षा करते हैं. मेरा कहना था कार्तिकेय जी, देखिए आजकल क्या है कि मुस्लिम समाज में मैंने 8 बताया ना, 2022 में हम लोग 8% वोट पाए हैं, लेकिन उसमें काफी ऐसा वर्ग है जो ये चाहता है कि हम भाजपा को कैसे हराएं, योगी मोदी को कैसे हराएं. तो ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं ये देखेगा कि हमारे लिए मुफीद कौन है. तो अब समाजवादी पार्टी को तो 22 में उन्होंने एक्सट्रीम दे दिया. अब इसके ऊपर समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है मुस्लिम से, यादव से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यादव भी भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ अब आना शुरू हो गए हैं. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो मायावती जी लेकर सोशल इंजीनियरिंग में चलती हैं, कहीं ऐसा हो गया तो घर में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाले, मुख्यमंत्री की कुर्सी से और एक्सप्रेस वे से अभी नीचे न उतरने वाले अखिलेश जी का क्या होगा, जो कि मेहनत नहीं करते हैं, जो कि कहीं नहीं जाते हैं. उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी से तो तुलना ही नहीं हो सकती. भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी दोनों जगह चुनाव प्रचार में गए, हमारे सारे एमपी वहां लगाए गए, मंत्री लगाए गए, सारे कार्यकर्ता लगाए गए, लेकिन इनके यहाँ से मुझे नहीं कहना चाहिए इनके पार्टी की चीज है, लेकिन वहां पर आज मेहनगर विधानसभा में, आज जो है आजमगढ़ विधानसभा में फोटो डालकर लोग फेसबुक पर खुश हो जाते थे नेता. और वो चीज उतनी मेहनत वहां पर हो सकता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र जी ने की हो, लेकिन बरखा जी मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, आप उनका इंटरव्यू करके देख लीजिए और आप कैमरा पूछ लीजिएगा, वो स्पष्ट ये कहेंगे कि मुझको शहीद करने के लिए भेजा गया था वहां. ये सच है और ये आने वाले दिनों में इसका राज खुलेगा. शिवपाल सिंह यादव के साथ इनके ही पार्टी में भी देखिए किस तरीके से विघटन हो रहा है, इनके परिवार में हो रहा है, और मैं समाजवादी पार्टी का अच्छा भविष्य नहीं देख रहा हूं. जी नासिर, इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें. नासिर. मुझे खुशी ये बात की है कि कम से कम ये तुझे कुछ सलाह भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी को बाहर निकलना चाहिए. तो चलिए, सही है, ये भी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे बात आपकी. बहुत बहुत शुक्रिया. मगर जहां तक देखिए समीकरण की बात है, मैं आपको बता दूं कि ये वो पार्टी है जिसने 34 मुसलमानों को विधायक बनाया, और ये वो पार्टी है जिसमें से 3 अभी एमएनसी जो गए उसमें से 2 मुसलमान गए. तो ये कहना कि मुसलमान हाथ छोड़ देगा समाजवादी पार्टी का, ये भ्रम अच्छा है, आप सोच सकते हैं. आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग, नासिर? देखिए बरखा जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा आपके सामने. सबसे पहले, आज की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है वो इतनी
खतरनाक हो गई है कि अगर कोई भी बीजेपी के सामने अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है कहानी, ये तो पूरे देश की कहानी है। अखिलेश यादव की आवाज कौन दबा रहा है? अखिलेश यादव जी की आवाज बिल्कुल किसी ने नहीं दबाई। अखिलेश जी तो आपके सामने थे भाई। अगर वोट शेयर बढ़ा, ये तो उन्हीं के कार्यकाल में बढ़ा। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर, मुस्लिम्स ने 80% वोट दिया 2022 में, 84% यादवों ने वोट दिया, ओबीसी ने आपको वोट दिया। तो आज जो पार्टी 2012 में जिसने 29% वोट शेयर पे सरकार बनाई थी 226 विधायकों के साथ, बरखा जी, आज वही पार्टी 36% वोट शेयर पाके भी हमने उसी हमारे पास I'll allow Kartikeya a brief interjection and then Kartikeya, yeah. बरखा, जब सब एडवाइस दे रहे तो एक हिमाकत मैं भी कर देता हूं नासिर साहब को ये बोलने की कि देखिए, एक कारण ये भी है कि मुस्लिम्स को नॉन बीजेपी पार्टीज जब तक सिर्फ सर्वाइवल का एक आइडिया देकर बोलती रहेंगी हमें वोट करो, बीजेपी आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तब तक आपकी स्थिति खराब ही रहेगी। आज की स्थिति में आपके पास मुरादाबाद, बरेली, रामपुर मंडल में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। वहां पर कुछ ऐसा करके दिखाइए अपने गवर्नेंस से कि लोगों को सही में लगे दैट यू जस्ट डोंट केयर फॉर द वोट्स दैट द मुस्लिम्स गिव यू, बट यू एक्चुअली केयर फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंडिकेटर्स। अश्विनी जी को भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, आप और सलाह दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को? कार्तिकेय जी की बात पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कार्तिकेय जी, इतना मंडल आपने बता दिया। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी लखनऊ कैंट विधानसभा में तो खुला बोल चुके हैं कि मैंने अयोध्या में इतने हिंदुओं को मरवा दिया, अब आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो अब क्या करेंगे आप बरेली मंडल से लेकर वहां तक? अब ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम्स जो है चीजों को हर आदमी समझ गया है कि मुस्लिम चाहिए या मुस्लिम का वोट चाहिए। तो अब एक्सट्रीम पा चुके हैं। मैंने कहा एक्सट्रीम, और हम लोग यही हैं। कार्तिकेय जी अच्छी समीक्षा करते हैं, फिर हम लोग चुनाव के बाद बैठेंगे। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि कितना वोट समाजवादी पार्टी जो है 2024 में पाती है। बट मैं राधिका को लास्ट वर्ड देना चाहती हूँ। व्हाट इज ट्रू आई थिंक इज दैट द मुस्लिम वोट और द सपोर्ट consolidation, as you mentioned, for the Samajwadi Party probably peaked in the last assembly election. It cannot go any higher. So this sudden disenchantment, if that is indeed what has happened in Azamgarh, that is a cause of great concern for the Samajwadi Party, I mean. Yeah, Radhika, it's a cause of great concern. We've talked a lot about Azamgarh. I'd just like to take you to the west, to Rampur. You know, now Rampur, the demography is almost equally divided between the Hindus and the Muslims. What happened over there? You know, why? I mean, and the victory margin was a little more convincing over there in Rampur. Did the Muslims not come out? Were they not allowed to come out by the police and administration, as was alleged by the Samajwadi spokesperson? I do not know. I mean, unless one is present on the spot, one cannot say. But these are disturbing signals which are coming out for the Samajwadi Party, both from Azamgarh and Rampur. These are bypolls, all right, but I will not dismiss the signals that are coming out. And Akhilesh Yadav, I mean, you know, it's no good just stepping out and talking. What are you going to talk? What are you going to message? Yeah, he has to go back to the drawing board. He has to begin right there. You know, clearly the MY social coalition doesn't hold anymore. So he did manage to get some other OBC votes as well, but the BJP holds a chunk of those, their support, the non-Yadav OBCs. And Barkha, one last thing. The Yadavs also voted the BJP since 2014. This is borne out by my own surveys. You know, it may not be in very large numbers, but yes, they have voted. They have gone with the mainstream, so to speak, the Hindutva mainstream, because Yadav after Yadav said, क्या हम हिंदू नहीं हैं, हम राम मंदिर को इसका समर्थन नहीं करते हैं. They don't want to be out of the whole Sanskritization process. This is
another thing which the Samajwadi Yes, Party will have. very to important point. So the Yes. Samajwadi Party's conventional assumption of the MY as its base is actually being challenged bit by bit, not dramatically, not overnight, but certainly bit by bit, and that is what is emerging in these bypolls, along with a very clear Hindu consolidation, including among Dalits, and that is something, at least that's what we've seen in Rampur very evidently, I think is the point that Kartikeya also made. Leaving it there, Nasir, Ashwini ji, Radhika and Kartikeya, thank you so much, and to our audience, have a great evening. See you tomorrow. Thank you. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.